Hello and welcome. You're watching Question Hour on Rajya Sabha TV, a unique show where we get you the questions that are asked by the members in the upper house from various ministries and departments. I'm your host Rajat Kain and I'm joined with my colleague Kriti Mishra. Thank you so much, Rajat, and I hope that all our viewers are keeping well and taking good care of themselves. Well, this show focuses on the question hour and how this very important piece of parliamentary procedure plays a very important role in parliamentary democracy and how it's extremely vital for public good. Now, broadly speaking, there are three categories of questions. First, starred, second, unstarred, and lastly, short notice questions. Now, starred are the ones where questions are sought by the ministries and replies are given on the floor of the House by the Minister of the Ministry and the department concerned. And unstarred questions are those questions of which replies are given by the government in written format. And our show focuses on all the important unstarred questions asked by the members of the upper house in the previous sessions of Rajya Sabha. So Kriti, let's begin the show. Well, starting with the first question of the show that is asked by members M. Shanmugam and T. Subbarama Reddy from Ministry of Defence. The member asked whether it's a fact that there is a big gap between existing strength and operational strength, especially in technical fields and ordnance factories across the country, and what are the details of operational vacancies in each factories if they exist, and lastly, what are the efforts made by the government to fill all sanctioned strength and by when these sanction posts are likely to be filled up. Responding to this query, the government says that there is a gap between operational and existing strength, resulting in an operational vacancy of 30,007 against operational strength of 1,10,000, which have to be operated based on functional requirement or workload in various factories. Most of these vacancies are technical in nature. Occurrence of vacancies and their filling up is a continuous and an ongoing process. Vacancies are filled up from time to time on need basis as per the existing procedures and rules. OFB or Ordnance Factory Board has recently concluded the recruitment of 2,668 industrial employees, 188 Group B officers and 121 Group A officers. Also, OFB has sanctioned the recruitment of 378 non-industrial employees and 692 chargemen, which is Group B post vacancies for direct recruitment, which is under process currently. And now let's move on to the next question asked by member Kanta Kardam, and this question pertains to the Ministry of Women and Child Development. And the member has asked about the funds allocated in the last 5 years for women empowerment, and the member has also asked the reasons or whether the government has ensured proper utilization of these funds. Well, giving a detailed response to query, the minister said the ministry is implementing two centrally sponsored schemes. These are Umbrella Integrated Children Development Services, that is ICDS, and Mission for Protection and Empowerment of Women. The budgetary provisions are made sub-scheme wise under these umbrella schemes. The details of funds allocated and released under various major schemes of Ministry of Women and Child Development for the development of women during the last 5 years is placed in the annexures that has been replied by the ministry, and these contains in annexure 1 for the financial year 2014-15 and for 15 and 16 to 2019-20 in the annexures 2. Now, moving on to supplementary asked by the member, the ministry go on to explain that to ensure proper utilization of funds released, the ministry has issued detailed guidelines for each scheme, which include explicit information about institutional structure, implementation modalities, target beneficiaries, fund flow and dispersal mechanism, monitoring and evaluation mechanism, and grievance redressal mechanism. The proposal for the state governments as and when received under various schemes are considered as per guidelines of those schemes. The schemes have inbuilt monitoring mechanism. The ministry has also developed web-based management and information system software to monitor implementation of various schemes such as PMMVY, Poshan Abhiyan, Anganwadi services. PMMYV is monitored through PMMYVCS and Poshan Abhiyan and Anganwadi through ICDS CAS.
Now, monitoring of other schemes is undertaken through meetings and video conferences with officials of state governments and union territories. Ministry officials undertake field visits to ascertain the status of implementation of these schemes. And lastly, subsequent funds under schemes are released only after receipt of utilization certificates, statement of expenditure submitted by the states and union territories in respect of funds released by the ministry. Mrs. Kardam, welcome to Rajya Sabha Television and thank you so much for joining us. आप जैसा कि जानती हैं कि जो हमारा ये शो है क्वेश्चन आवर शो, वो उन सभी प्रश्नों को दिखाता है जो राज्यसभा के सदस्य पिछले सत्र में अनस्टार्ट जो सवाल होते हैं उनको जो सदस्य पूछते हैं। और अगर आपके सवाल की बात करूं तो आपने महिलाओं के लिए किस तरह से फंड्स यूज़ हो रहे हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए आपने बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। कितना बड़ा मुद्दा और क्या मत है आपका सरकार के जवाब पर? देखिए, जब से सरकार आई है, आप 14 से अगर शुरू करेंगे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था पहले ही कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ भी तो है ही, लेकिन बेटियों को आगे बढ़ाओ, ये भी उन्होंने कहा है और उस पर देखिए काम भी चल रहा है। हमेशा कोई भी बात होती है, कोई भी उनकी केंद्र सरकार की अगर योजनाएं देखें या कहीं भी है, मतलब बेटियों की बात आती है और उनको बढ़ाने की हमेशा बात करते हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं। अगर हम पार्लियामेंट की अगर बात करते हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल आए हैं जो महिलाओं पर हैं और वो बहुत ज़रूरी थे और बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, 14 से भी पहले, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया चूँकि महिला हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वो सब करके दिखाया जो नहीं कोई कर सकता था। तो अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो अपनी ट्रिपल तलाक की मैं बात करूंगी, तो मुस्लिमों की महिलाओं की बात करूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यही है कि महिलाएं हैं हमारी हैं, तो उनकी सबकी बात उन्होंने करी है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने कुछ नहीं है कि महिलाओं का दर्द है। तो ट्रिपल तलाक वो लेकर मतलब लाए। ऐसा उन्होंने जो है इसको पास कराने का जो सदन में जो काम किया ना अपने रविशंकर प्रसाद ने, बहुत ही मतलब उन्होंने संघर्ष किया। देखिए, बहुत जूझना पड़ा। विपक्ष के लोगों ने, कई ऐसी हमारी पार्टियां थी जिन्होंने हमारा सहयोग किया, कई ऐसी नहीं थी नहीं सहयोग किया। लेकिन महिलाओं के मामले में मतलब जिन लोगों को सहयोग करना था, एक बड़ी पार्टी जो केंद्र की, उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उसका विरोध किया कि नहीं पास होना चाहिए। लेकिन वो पास होना इतना ज़रूरी था क्योंकि महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो शादी के बाद वो कई बच्चों की माँ भी बन गई हो, उसको पसंद नहीं आ रही है या कोई थोड़ा सा नोक झोंक हो गई है या उनको मतलब परेशान मतलब देखते हैं कि ये मेरे से कुट्टो कटाकी कर रही है, कि ये गलत चीज़ें हैं ये, तो ऐसे करके भी कई बार क्या तलाक कह के तलाक दे दिया है। तो उससे क्या है कि ना तो मैके में जगह मिल रही है और ना ससुराल, तो फिर कैसे उसको वापस आने के लिए उस पति के पास में उसको दूसरी शादी करनी पड़ती है। अभी देखिए कितनी शर्म की बात है महिलाओं के लिए कि उसे दूसरी शादी करनी पड़ती है अपने पति के होते हुए भी है। तो ये बहुत हुआ, मतलब आजकल की जो महिलाएं या पहले भी देखिए दबाव डालने पे ये सब करती थी, लेकिन आज बहुत जागरूक महिला हैं, ये सब नहीं करना चाहती हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी है कि उन पर अत्याचार ना हो, तो उनको रोकने के लिए तलाक लगाए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही बहुत सारी उसको भी है, जैसे कई बार देखा कि रेप हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के भी कई ऐसे कदम उठाए हैं हमारे पार्लियामेंट में, बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जो बिल लेकर आए हैं, जिससे कि उनको जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको जो है एकदम जो उनके साथ में किया है, 12 साल की जैसे लड़की है और उसके साथ में अगर कोई घिनौनी हरकत की है तो तत्काल उसको सज़ा मिले, ऐसा परिधान होना चाहिए कोर्ट से भी। तो कोर्ट में भी इस तरह से मतलब बिल को जो है पास कराने के लिए भी है। तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट में इस तरह का महिलाओं को देखते हुए भी है कि महिलाओं के साथ बहुत शोषण है, उसे रोकने के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं कि उनको ऐसे सख्त कानून है कि जो आगे से घिनौनी हरकत ना करे। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल भी वो लाए हैं। और रही भी केंद्र सरकार की योजनाएं, तो सैकड़ों योजनाएं जैसे कि भी हम जिक्र करते आए, उज्ज्वला योजना का हम जिक्र करते आए, हमेशा शौचालय बनवाने का हम जिक्र करते आए, तो महिलाओं में ही है। और प्रधानमंत्री आवास की बात अगर करें तो इससे क्या महिलाएं ही जूझती हैं। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। और अगर जनधन खाते की हम बात करें, 20 करोड़ महिलाओं को जो खाते देने का काम किया, खुलवाने का काम किया है कि महिलाओं के लिए, देखिए पुरुष तो खाते खुलवा ले
लेकिन महिलाओं के लिए इतनी लापरवाही है कि अगर आप देखोगे कि गरीबी के कारण वो महिला ना तो उसको उसके पास पैसा है खाता खुलवाने के ना है, उससे कितना लाभ मिला। अब ये देखिए कोविड के उसमें महामारी में जो है आप देखिए कि वो ही जनधन खाते में 500 रुपये उनको लगातार उसी दिन से उनको दिए जा रहे हैं। उज्ज्वला की हम बात करते हैं, उसी दिन से उनको गैस खरीदने के लिए उनको पैसे डायरेक्ट उनके खाते में उनको डाले जा रहे हैं। तो कोई भी पैसा अगर केंद्र सरकार दे रही है तो उनके खाते में मतलब डायरेक्ट उनको दे रही है। तो ये महिलाओं के लिए देखिए बड़ी उपलब्धि, बड़ा लाभ है। तो ये सब करके दिखाया देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, ये बहुत बड़ा ये कदम ये उठाया है। और बहुत सारी जैसे अभी देखें 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ उन्होंने महिलाओं की बात कही है। तो ऐसे ही नहीं कही है, उसमें भी देखिए जैसे कि छोटी हमारी सिलाई मशीनें जानती थी महिला ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, अब ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठी हैं वो जो हैं, या सिलाई बुटीक खोल कर बैठे हैं, उनके लिए भी उस लोन उसमें जो है पैकेज में बहुत सारे मतलब ऐसे हैं कि उनको लोन मिल सकता है, वो अपना आप को आगे ले जा सकती है, आगे बढ़ा अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। तो ऐसे रेडीमेड गारमेंट की वो फैक्ट्री खोल सकती हैं, बड़ी बुटीक खोल सकती हैं, जो पैसे के अभाव में वो नहीं कर पाती हैं। मतलब सारी चीज़ें जानकारी होते हुए भी पैसे का इतना अभाव है, सभी समझते हैं कि नहीं कर पाती हैं वो जो हैं, आज जो है उनको जो है इस पैकेज से बहुत राहत है। ऐसी बहुत सारी महिलाओं को चिन्हित किया गया है जो उनको लोन दिया जा रहा है और दे भी गया है वहाँ पर है। तो ऐसे ही है जैसे कोई भी व्यापार करना चाहती है महिलाएं वो कर सकती है कोई भी। तो ये मोदी जी की देखिए ये 2014 से ही पहल है और आज तक भी वो महिलाओं के लिए हर किसी में भी, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, कोई पार्लियामेंट में कोई बिल हो, लोकसभा में बिल हो, कोई भी है तो महिला के संबंधित हैं। और जो कोविड में भी जो भी हैं तो महिलाओं को देखते हुए भी उनको भी सारी, क्योंकि महिला घर चलाती है, अपने परिवार को चलाती हैं, उनको है पालती पोसती हैं, उनको पता होता है, उनको जानकारी होता है कि घर में किस तरह की क्या दिक्कत है। अभी आप देखेंगे कि महिलाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार ने जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने और जो स्टेटों की सरकार भी हैं उन्होंने जो है बहुत सुविधाएं उनको दी हैं। जैसे कि आपने देखा कि राशन की किसको पता होते है रसोई में क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं ख़त्म हो रहा है। तो उस समय क्या है कि राशन जो है फ्री देने का काम उसी दिन से जो राशन की दुकानें हैं वहाँ से फ्री राशन जो उनको मिल रहा है और उनको वो सब सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि फ्री चना है, दाल है, उनको है चावल है, गेहूँ है, वो सब मिल रहा है और लगातार मिल रहा, नवंबर तक उनको मिलना है। दूसरी बात है अगर हम महिलाओं की बात करें तो प्रवासी महिलाएं देखिए कितनी हैं, इधर से उधर से ये गई हैं, मजदूर महिलाएं भी हैं, मजदूरी बहुत करती हैं महिलाएं जो हैं, उनके लिए भी देखिए 1000 का एक किट बनाकर जो पैकेट बनाकर उसमें जो सारी चीज़ें तेल है, चाय की पत्ती है, आटा है, ये मसाले हैं, वो सब चीज़ें हैं लगातार उनको दिया जा रहा है उसी समय। तो देखिए महिलाओं की चिंता जो है सरकार या किसान महिला हैं तो ऐसे उनको भी बढ़ाने का मतलब बढ़ावा देने का काम किया है। उनको भी हर तरह से जो हमारे किसानों के लिए जो लोन का जो इसमें पैकेज में इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा दी है, तो उन्होंने पर्सनली महिला भी हमारी वो किसान है कि वो अपनी किसानी को बढ़ा सकती हैं, अपनी जो है उपज को बढ़ा सकती हैं ना, तो उनको सब चीज़ें उनको भी देने का काम किया है। तो मैं जानती हूँ कि महिलाओं के लिए जो अब इस सरकार में काम हो रहे हैं वो कभी नहीं हुए और महिला जो आज कहते हैं ना कि कंधे से कंधा मिलाकर जो महिलाओं को चलना चाहिए, आज मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ गया कि कंधे से कंधा महिला मिला के चलना चाहती है और मिला के चल रही है और मिला के चलेंगे। कांता जी, आप हमसे जुड़ी, आपने अपने सारे सुझाव हमारे सामने रखे, राज्यसभा टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। So Rajat, that was Rajya Sabha MP Mrs. Kanta Kardam and her views on the question asked by her and the reply given by the government. But time for a short break, lots more on the other side. भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कभी कॉन्वेंट गया नहीं, ग्रामीण स्कूल में पढ़ा मैं बचपन में, मेरे परिवार में कोई पढ़े लिखे लोग भी नहीं था उस समय। 3 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जाके पढ़ के मैं वापस आ गया, बिजली भी नहीं था।
know, promote, practice, propagate your mother tongue, because you will be able to better your knowledge. There's something has gone wrong with our education system. We have not given enough importance. We are crazy for English. Nothing wrong in learning English. Should also know English. Before going to English, you should learn your mother tongue. Mother tongue is like your eyesight. Other language is like your spectacles. And moving on, the next question has been asked by two members, Member M.V. Rajiv Gowda and Member Bhaskar Rao Nikanti. And this question pertains to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And these members have inquired about the number of cities under National Clean Air Programme and also whether Ministry has formulated guidelines for State Action Plan and Final Action Plan, if so, the details thereof. Well, replying to query, the ministry said that the central government launched National Clean Air Programme, that is also referred to as NCAP, as a long-term time-bound national level strategy aiming to reduce PM10 and PM2.5 concentrations by 20 to 30% by the year 2024, keeping 2017 as base year. Now, based on the ambient air quality data for the period of 2011 to 15 and 2011 to 15, 102 cities are identified as non-attainment cities, exceeding national ambient air quality standards for consecutive 5 years. Now, under the National Clean Air Programme, city-specific actions plans has been prepared for ground implementation in 102 non-attainment cities, targeting all major city-specific sources of pollution that contains soil and road dust, vehicles, domestic fuel, MSW burning, construction and material and industries pollution, with short, mid and long-term action. Now, as per the information provided by the states under NCAP, source apportionment study has been awarded, completed in 45 cities and is in process in further 35 cities. Now, the detailed status of the source apportionment studies is in the annexures provided with the reply, and the emergency response systems is part of the action plan developed for 11 states and is under process in 7 states, and details are also furnished in annexure in the reply. Well, moving on to the next question that was asked by member Sanjay Raut from Ministry of Coal. The member asked whether coal subsidies for coal industry is continuously increasing while subsidy for fossil fuel including oil and gas has decreased by nearly 75% during last 3 years in the country. What are the details, and also whether the government's attention have been drawn towards reports and complaints that many closed industries are getting subsidized coal and they are selling it in open market and earning huge profit, particularly in Maharashtra. What are the details and what is the government's reaction to it, and what are the steps taken by the government to control coal subsidy and its misuse? Responding to this query, the government says that Ministry of Coal releases fund to coal companies under the scheme Conservation and Safety and Infrastructure Development in Coal Mines as payment against collection of cess or excise duty on coal and coke for conservation and development related work, including infrastructure development. This cess, a specific purpose levy under the Coal Mines Conservation and Development Act of 1975, has now been subsumed under Goods and Services Tax or the GST. Release under the scheme are classified as subsidies in the budget of the ministry for technical reasons. Fund released to Coal Ministry under the coal sector for conservation and safety infrastructure development in coal mines was 182.40 crore in the financial year 2018-19 in comparison to 499.50 crore in the financial year 2017-18. Further, there is a budget provision of 135 CR in financial year 2019-20 under the scheme. No complaints of selling subsidized coal by closed industries in open market, particularly in Maharashtra, has been received by the ministry so far. Let's move on to the next question asked by member A.K. Selvaraj, and this question pertains to the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. And the member has asked whether it is a fact that electric cars in India are not gaining that much of enthusiasm among the users because of lack of sufficient charging infrastructure, and whether it is a fact
that electric vehicle adoption will increase only when cars of decent range are made available and the details thereof. Well, giving a detailed reply to this query, the ministry said that in order to promote adoption of electrical vehicles, including electric cars in India, Department of Heavy Industry formulated FAME, India, that is Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid Electrical Vehicles in India scheme in March 2015. The phase 1 of this scheme was initially launched for the period of 2 years, commencing from 1st of April 2015, which was subsequently extended from time to time, and the last extension was allowed up to 31st March 2019 with total outlay of rupees 895 crore. The first phase of the scheme, about 2.8 lakh hybrid and electric vehicles were supported by way of demand incentive. Further, the DHI, that is Department of Heavy Industry, sanctioned 425 electric and hybrid buses to various cities in the country. The Department of Heavy Industry has also sanctioned about 500 charging stations and the infrastructures for the electrical vehicles, including electric cars. Based on the outcome and experience gained during phase 1 of FAME India scheme, and after having consultation with all stakeholders, including industry and industry association, the government notified phase 2 of FAME India scheme on 8th of March 2019, which is for a period of 3 years commencing from 1st of April 2019 with total budgetary support of rupees 10,000 crore. Now, this phase will mainly focus on supporting electrification of public and shared transportation and aims to support through demand incentives about 7,000 e-buses, 5 lakh e-3-wheelers, 55,000 e-4-wheelers, passenger cars and 10 lakh e-2-wheelers. In addition, creation of charging infrastructure will also be supported to address range anxiety among users of electric vehicles. And lastly, under phase 2 of FAME India scheme, the government has sanctioned 2,636 charging stations for electric vehicles, including electric cars in 62 cities across 24 states and union territories under FAME India, that is Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles in India scheme, phase 2. So Rajat, these were the important questions and answers in this edition of the Question Hour show. Well, thanks for watching this edition of Question Hour. You can also watch and follow various programs of Rajya Sabha TV, Question Hour included, on our YouTube channel. Thank you for watching this show.